Hi, hi, hi. So, welcome everyone to the third session of materials, metals, and non-metals. In the previous class, we have seen that chemical reaction with the oxygen and the water, and we have classified that if that oxygen will react with metal, then it will form metallic oxide, and if non-metals will react, then it will form non-metallic oxide. But non-metals will not react with water. Okay, but metals will react with water to form hydroxide and hydrogen gas. So this we have seen and classified according to their chemical properties. That oxygen metal means metallic oxide, non-metal means non-metallic oxide. And we have also seen that if it is water, then it is hydroxide for metals, and non-metals is there, then it will not react. So we have done physical properties and chemical properties too. Now more two are left. That was the most important one. That is the acid and base. So let's see that how we can make react an acid and base. Okay, chalo, chalo guys. So let's start the session three. So we have done this too, and some part of this, that is oxygen and water, in the previous. We will do the what acid and base. Okay, uses we will do in the next class. That is a short topic. I am telling you it will be very easy for you. That's why it will take just 15 minutes next class. Okay, maybe I am telling, or 30 minutes also. Most of the metals react to water to form dash and dash. This. I've just recapped also the previous class, so you can easily give the answer. Water. It's two. This option will not be the answer. This is my hint. So see, Na plus H2 will from NaOH, right? Na plus OH is forming what? NaOH. So NaOH is what? A hydroxide, which is actually sodium, so metal plus hydrogen gas. Right? Correct or not? You tell me. Sodium metal reacts most vigorously stored in kerosene, वो फॉर्म करेगा बेसिक ऑक्साइड. बट देखिए, ये मुझे दो बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है. सो प्रैक्टिस गाइस, ये बेसिक होता है, राइट. और ये केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि विगरसली रिएक्ट करता है. सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन. ओके, सेम क्वेश्चन. नाउ लेट्स गो. हैव यू सीन पिकल्स? आचार. This one more chapter is there, microorganism. There also we will discuss the biological way of what why it is stored. So we will see the metals react with acid. So take magnesium ribbon and put dilute hydrochloric acid. So we will put dilute hydrochloric acid. See, I've taken magnesium, aluminum, zinc, copper plus HCl I have taken. Okay. Now when this will be reacting metal plus acid, what will form? Can anyone tell me who have read this chapter in your home? It will form metal salt plus hydrogen, like Na plus HCl. What will form? NaCl plus H2. Hydrogen gas will evolve. So that's why magnesium plus HCl will form magnesium chloride plus hydrogen. Okay. Then aluminum with hydrogen, sorry, HCl will form aluminum chloride, yeah, and it. Okay, LCl2 plus H2. Zinc plus HCl will form that zinc Cl2 plus H2. See, the
the metal salt. Magnesium is at the, this is the salt is forming. Aluminum is there, aluminum salt. The zinc is the zinc salt. Copper will not react. Okay, see this. Copper does not react with hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. Now देखिए hydrochloric acid तो is a type of weak. uh, Sulfuric acid is more पावरफुल. यहाँ पर हाइड्रोजन लेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, तो इट विल बी रिएक्टिंग मोर क्विकली, मोर फास्ट. दैट्स वाई it can react. So you will be having one more acid as HNO3 nitric acid. First, for this you have to need the radical value of NO3. What is NO3? NO3 valency 2, 1, 2, 1, 6. 6 how not possible. Yes, correct. 1. Sorry, not H or NO3. Right, NO3. NO3 का valency is 1. क्या है valency? 1. तब इसके साथ कॉपर रिएक्ट करेगा क्या होगा बोलिए मुझे पहले. सी यू का वैलेंसी 2 होता है, तो इनो 3 प्लस सिंपल. एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है. नाउ कॉपर प्लस HCl there will be no reaction. कॉपर प्लस H2SO4 क्या होगा गाइस. H2SO4 का वैलेंसी कितना होता है, सॉरी SO4 का वैलेंसी कितना होता है. टेल मी दैट इज योर जॉब. 2 वैलेंसी. ओके, इसका बैलेंस होता है 2. मतलब कॉपर का भी 2 ही है, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा. सिंपल. ये कॉपर है, इसका सॉल्ट सॉल्ट फॉर्म हो गया. ये कॉपर है, इसका सॉल्ट फॉर्म हो गया. सिंपल थिंग आप समझ लीजिए कि मेटल प्लस एसिड विल बी फॉर्मिंग मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस will be formed. Simple. Now how we can uh, test for hydrogen gas? When we, this is known as the pop-up experiment. Pop-up. When we bring burning mastic near a test tube, the hydrogen gas ignites and pop-up sound is generated. So hydrogen gas was releasing, and this will ignite it, and a pop-up gas will release. Now this pickles contains these acids. The acid could not react with the metal liberating hydrogen gas. This can lead in the spoiling of the metal. इसलिए इसे ग्लास या प्लास्टिक में स्टोर, मेटल में नहीं स्टोर किया जाता है. मेटल तो एसिड है, तो एसिड के साथ ये तो हाइड्रोजन निकाल देगा और सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा. तो जब ये हाइड्रोजन निकाल रहा है, तो ये हाइड्रोजन का स्पॉइल कर सकता है हमारा फूड को. सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. ओके, सिर्फ मेटल ही करता है और सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस. सिंपल. रिएक्ट, रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ लेट्स सी. Metal X react vigorously produce Y which burns with popson. See, Y क्या है, हाइड्रोजन है. ये आंसर होगा. सिंपल. इसका सोडियम क्यों है, सोडियम पोटेशियम ये दोनों वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, आप जानते हो, राइट. चलो, जिंक कॉपर मैग्नीशियम एल्युमिनियम will not, which will not, copper will not react with HCl. It will react with H2SO4. Your work is try. You can see Google also, but try to react, make it react, and find the product of this one. This is sulfurous acid, okay, and find the product.
Okay. Now, so far we have seen the reaction of metals and non-metals with oxygen, water and acid. Now let's look the metal and non-metal with bases. जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. मेटल सेम थिंग. यस. नॉन मेटल प्लस बेस विल फॉर्म नॉन मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर. सो मेटल क्या करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. और नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर. इसका बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है दैट यू विल नॉट लर्न नाउ. दे द रिएक्शन आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ओके. तो बेसिस का रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. मेटल के साथ मेटल प्लस बेस होगा तो क्या होगा, मेटालिक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. और नॉन मेटल होगा तो ये मेटालिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, मतलब H2O. और जब एसिड होगा तो क्या होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ. एसिड के साथ क्या होता है, एसिड प्लस कोई भी हो, क्या होगा, कोई भी एसिड हो, सॉरी एसिड प्लस मेटल होगा तो क्या होगा, मेटालिक सॉल्ट. उसके साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा. नॉन मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विद दिस. सी द क्विज. मेटल रिएक्ट विद बेस to produce dash and dash. Salt, water, hydrogen, both A and C. Metals, water and hydrogen. Correct. Sorry, salt and hydrogen. Correct. Means option number D. Okay. Next. This is very important part, that is displacement reaction. Now, this is one new type of reaction you have seen. Now, अगर आप देखोगे कि जब भी एक गुड परफॉर्मर होता है, जैसे ये एक गुड परफॉर्मर है अपने इंडियन क्रिकेट टीम में, और ये बैड परफॉर्मर है, पुअर परफॉर्मर है. इस ये गुड परफॉर्मर क्या करेगा, ये पुअर परफॉर्मर को रिलीज कर देगा. और एक एग्जांपल दे रहा हूँ. एक रोल नंबर 1 है जो टॉप करता है क्लास में. ओके. एक रोल नंबर 2 है जो टॉप नहीं करता बट सेकेंड आता है. In 2022 to 23 session, they his study has decreased and his study has increased. That's why he have now become top and he has become now second. So he is displacing him. He is removing him from his position to get his position and making him side. Okay, this type of reaction also happens in chemistry. Same is the case. लाइक रिएक्शन ऑफ जिंक. ना कॉपर सल्फेट और जिंक जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. क्यों, ये जो जिंक है वो ज़्यादा पावरफुल है तो इसको हटा देगा. और ये क्या, इस कॉपर को अपने जगह से हटा देकर वो जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को अलग कर देगा, वो कॉपर हो जाएगा. ओके. तो जब ये होगा तब हम लोग पहले देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, ब्लू कलर का लिक्विड होता है कॉपर सल्फेट. जब उसमें ये देखिए जिंक है, ये जिंक है. जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब रेड स्ट्रक्चर्स देख पाओगे, वो आपका होता है कॉपर. और ये कलर को लूज कर जाएगा, ब्लू नहीं रहेगा, ऐसा ब्लू नहीं रहेगा, क्योंकि वो हो जाएगा जिंक सल्फेट जो कि जिंक का सॉल्ट है. ओके. नाउ नेम द रेड पाउडरी मास. वो है कॉपर, मैं बोल दिया. कॉपर होता है रेड पाउडरी मास. अगर आप देखोगे वो रेड इस कलर होता है कॉपर, और उसका सल्फेट होता है क्योंकि ब्लू इस कलर. और Fe SO4 होता है क्या, ग्रीन इन कलर. ओके. अगर कॉपर प्लस सॉरी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन होगा तो ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट पर कॉपर. ओके. तब ये जो डिपॉजिट हो रहा है, इसे क्या है, ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है.
कॉपर सल्फेट प्लस जिंक मैंने बता दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्यों ये हो रहा है? जब ये कॉपर अपने जगह है इसे डिस्प्लेस कर दे रहा है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। व्हेन अनदर एलिमेंट विल डिस्प्लेस a element from a salt solution because of its high reactivity, and that type of reaction is called as the displacement reaction। चलो नेक्स्ट वन देखिए। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट जिंक दैट विल रिप्लेस द कॉपर। यहाँ पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए कॉपर को ये कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। it will replace copper, zinc will replace copper। This kind of reaction where replacement is happening, replacing the high reactive is replacing the low reactive, that type of reaction is called as a displacement। See, the displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive metal displaces a less reactive। जो ज्यादा है वो अपना पावर दिखा रहा है और लेस को हटा दे रहा है अपना सॉल्ट सॉल्यूशन से और इसको अपना राजत्व। तो ये क्या लिखा है देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इन एक्वा सॉल्यूशन। देखिए ये ए है, ए और बी और सी एक साथ था, इसे सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये कमजोर दिल का है, बी कमजोर है, तो ये ए बी का जगह ले लेगा, तो ये एसी होगा, इसका सॉल्ट हो गई है। इस बी का सॉल्ट नहीं रहा, ये किसका सॉल्ट होगा? ए का सॉल्ट में। जैसे जिंक, ये अगर कॉपर सल्फेट होता और जिंक होता तो ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट। ये तो कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्ट, जिंक का सॉल्ट हो गया। कॉपर सल्फेट का था, जिंक ज्यादा है इसलिए जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर को अलग कर दे। देखिए तो इसका ऐसे ही लिखा जाता है कि ए प्लस बी सी विल गिव ए सी प्लस बी। This is this. Now let's see. Zinc is the more reactive, iron is the less reactive than zinc copper। मतलब अगर आयरन सल्फेट है और जिंक है तो क्या होगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा और आयरन रेसिड्यू हो जाएगा। सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, कॉपर विल कांट डिस्प्लेस जिंक बिकॉज कॉपर तो लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर कांट डिस्प्लेस आयरन बिकॉज कॉपर तो लेस reactive than iron, iron can't displace zinc because iron is less reactive than zinc, only zinc and iron can replace copper। बस यही रिप्रेजेंट हो सकता है, या फिर जिंक आयरन को रिप्लेस कर सकता है। नाउ एक चार्ट दे रहा हूं मैं, आप देखिए ये जो चार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर का जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे का जो है वो लेस रिएक्टिव है। देखिए प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हाइड्रोजन, लीड, टिन, आयरन, जिंक, कार्बन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप अगर दे दिया कि कॉपर सल्फेट प्लस एल्युमिनियम तो ये क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर। So you have to see this part that कहाँ से हम लोग रिएक्शन को पॉसिबल करेंगे, कहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ये जो चार्ट इसको याद करना है। तो दो काज इस चैप्टर में, वैलेंसी और ये रिएक्टिविटी सीरीज, और यूजेस तो आपको याद हो जाएंगे। चलो क्विज में चलते हैं। ऑब्जर्व दिस, एक्स एंड वाई। एक्स क्या है? ये जिंक का गैस, वाई क्या है? ये कॉपर का गैस। सो डी ऑप्शन। चलो now uses of metals and non-metals we will do later, first see this। Okay, this is the thing। Okay,
देखो, जब रास्त होता है तो Fe+O2 का होकर Fe2O3 हो जाता है और इस जो लेफ्ट आउट हो जाता है। नाउ यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर अगर इसमें ऐड कर दे तो ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। कॉपर, ये कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, यू नो, दैट्स वाई यहाँ पर रस्ट नहीं होगा, रस्ट होगा पर नहीं होगा। देखिए जिंक है, सॉरी सॉरी नॉट कॉपर, जिंक, जिंक है ऊपर में, उसके नीचे आयरन है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको बचाते रहेगा ये, और ये रस्ट हो जाएगा पर आयरन रस्ट नहीं होगा। और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये रस्ट भी नहीं पड़ेगा। तो जिंक का ये गैल्वानाइजेशन है, रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जानते हैं कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रिक वायर के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। आयरन को नेल, स्क्रूज, नट बोल्ट्स, पाइप्स, गैस सिलेंडर, ब्रिज, रेलवे लाइंस, बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं, राइट। About 70% of your body's iron is found in the red blood cells of your body, blood, called hemoglobin. It is useful in transferring ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन होता है आपके रेड ब्लड सेल में, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम इज द पावर हाउस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकते। जस्ट लाइक metals, non-metals also have many applications. Like nitrogen is used in industries for production of ammonia and ingredient for fertilizer. अमोनिया आप जानते हैं NH4 होता है, तो ये नाइट्रोजन तो जरूरी होता है, राइट। ये अमोनिया एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है सॉइल में। ओके, आयोडीन इज अप्लाइड टू वुंड्स एट एंटीसेप्टिक, राइट। सल्फर इज यूज इन क्रैकर्स। In steel industry we use graphite rods to, graphite is a non-metal but still it conduct electricity, that is an exception, right. So that's why it is using electrodes. Electrodes means that is used for transferring the electricity, that we have a chapter, chemical effects of electric current। okay, बोलिए। क्रैकर्स बनाने के लिए सल्फर यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर, देखिए ब्लीच तो आयरन है, एंटीसेप्टिक ये है, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन है। वेरी गुड। Okay, let's go to quiz time. Mr. Rakesh, a science teacher, organized a quiz in the class. He started few applications of non-metals and asked students to guess the names of the non-metals. Mark the correct option. Okay. Non-metals used in fertilizer. KCl. K क्या? भूल। Used for water purification. भूल। Non-metal used for cracker. भूल। Non-metal used in acid. This is correct one. Right. चलो, this is the this is it for this session. Meet you in the next session. Bye everyone. I hope you have learned some uses also. This session is very short I have made. That's why you can understand. You can repeat this videos. So bye.